All right, traders, a very good afternoon to you all. It's 12th April, Saturday, 12 p.m. almost. I, Avel Pramija from the Trade Psych, welcome you all to the market, post market analysis, outlook, and expectations from the market for the coming week. All right, so first of all, in this video, we'll discuss how was Friday, all right, because I think Thursday was holiday and Wednesday markets were on, Thursday was holiday, and then straight Friday. So coming Monday will also be a holiday. So we'll discuss the markets for Tuesday. हम Tuesday के लिए discussion करेंगे and we'll see that on Friday how are the markets on a brief. We'll just see and we'll also talk that what crucial levels will be there for the market, Nifty 50 and Bank Nifty for next week, and we'll also discuss some global sentiment developments which happened on I think Friday, right? And what is the general sentiment going in the Indian domestic investors? All right, so just before I start the discussion, right, if you are someone watching the video for the first time, just please watch the video till end. I'm damn sure that you'll not go empty-handed. Even, of course, you will learn something till the end of the video. And if you're liking till the end, subscribe to the channel, leave a comment, leave a like. And if you're someone from the Telegram group, leave a comment, leave a like. The video gets support. The more support I get, the better content I'll be able to make for you guys. Alright, so I'll leave the link to my Telegram group in the description box. In that Telegram group, basically, essentially, whatever we discuss, it is, in the context of trading. That whether, we give ideas basically. We do not sell, trades, or we do not give calls, inputs, instructions. Rather, we sell ideas and we sell knowledge. We are in the business of, financial education, not in the business of giving calls inputs, right? So I hope you understand. So if you are interested in getting to know that what you can do on intraday basis, what levels are crucial, you can join that Telegram group. It will be really really helpful for you guys. All right, so let's start with the discussion. So first of all, I would like to talk about Friday. So let's straight go to the charts. अब देखो फ्राइडे को हुआ क्या, एक बार I'll clear all my drawings. Right, Friday ko markets opened gap up on the sentiment that I think Trump, everybody, if you are a trader and if you're an active trader, that you then you must know that Trump announced a 90-day pause for additional tariffs on each and every country, and the basic 10% tariff is there. So on the backdrop of that, the Indian markets and the global market short and it opened gap up. So what has happened is on Thursday, right, when Indian markets were closed, this news was announced, and on Thursday markets rallied. But on Thursday, I think Wednesday night's market rallied, but Thursday night markets came down. So there was like on Wednesday night, GIFT Nifty was showing almost 1,000 points gap up, but on Thursday night, it came down to a 400 point gap up. So on Friday morning, we saw a 400 point gap up, and this gap up, the market opening was at the level of 22,700. So market ने किया क्या, and this I also even put in my this one Telegram community group, in a form of audio note, that whenever we see a huge gap up and it's not covered back on the downside, so it's a general indication that it might not get covered soon, which means that this 22,700 level can be now taken as a base level. Exactly, and this was a certain, this was exactly a resistance level for I think the session which was on 8th of April, right? So exactly market opened at that level and markets went ahead. And if I'll make you see, right, see whatever the shock came as a Trump tariff, and Nifty 50 gap down 900 points, the exact 900 points has been covered. So this was a gap which was created. अगर आप ढंग से देखोगे, so this was a gap which was created in one session on Monday, right? And it is I think on Monday or on Tuesday, on Monday I think so, because one day was holiday in Indian markets, and it was covered within three sessions. So this was Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday was a holiday, and this was Friday. So this whole gap down, it is covered actually. So there is no point now discussing about this gap. Now we have to talk about this gap. This gap is not covered. All right. So this is basically what happened on Friday. Market gap khula, and market ne, the important point which I mentioned out and which I emphasized upon, it was that
if a market, if an index, or if any stock, it opens gap up, and generally, not generally, and if it not, if it does not go for that gap covering, all right. And this also, you can note down as a rule that, if generally a good gap up happens, and if that gap up is not retraced back within the first hour or 2 hours or 3 hours, and the market stays above that level and gives a closing above that level. So generally, that means that that gap has not, it is the markets are not interested in covering that gap. Means that, markets can go further up before, coming down to cover that gap. So markets opened at 22,700 level, and as I made you guys see that exactly this is the level which was resistance of 8th of April session. And apart from that, this can be considered a little bit bullish sign, that if the markets, because generally we see a pattern here, we have seen in every gap up, if it's a 80 point, 100 point, 150 points, that whenever it gaps up, the market generally comes to test the prior day closing, but in this case it did not come. So from my analysis, it says that this gap will not be covered in coming 1 to 2 weeks, and the markets might move a little bit up towards a certain resistance level, and then when it is coming down, it might cover this gap, right? So this was the markets on Friday. So let's start the weekly discussion, right? And even before that, right, I'll clear all the drawings. So I think on Friday, right, nothing special came from Trump, nothing negative came from Trump, and because of that, if I make you see, GIFT Nifty is 100 points up. So markets were in a habit to listen something positive, something negative, and markets have gone into a huge volatility. So the last week, it was a crazy, crazy dramatic week, because if I'll make you see, the last week range itself, the markets, gapped down from 20 to 900 and went till 21,750. Can you imagine a gap down from 20 to 900? So it's almost 1200 point range in the week itself. So next week, if and this you can make it as a rule, until and unless for the next week, if the prior weekly high or prior weekly low is not getting breached, you might not get any trade. So you might see the markets, making a inside candle like this, or an inside candle like this, right? Because what has happened is there is huge volatility, and India VIX is still at the level of 20. So which generally, if the markets are healthily, if the markets have to healthily go up, the VIX should be at 13 14 level. So to digest that VIX, to bring that VIX down, markets might go sideways for the next week. So this is a disclaimer from my side to everybody, that if the markets are not taking prior week high or prior week low, you might not get any good bullish trade. Yes, you might get something like that. Let's suppose markets are opening here and the markets are retracing this full down, you might get this trade, but this trade will only get activated if we are breaching the 50 percentage of this green level. अगर किसी भी गुड बुलिश या बेरिश कैंडल का मोर देन 50% रिट्रेस हो रहा है, then it can take out the low, or it might go for the liquidity of the low and then turn around back, राइट. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट परस्पेक्टिव आपको नेक्स्ट वीक के लिए क्या फॉर्म करना है, कि आई थिंक 60 to 70% प्रोबेबिलिटी द मार्केट माइट फॉर्म एन इनसाइड कैंडल. इट मीन्स दैट इट माइट नॉट ब्रीच द रेंज ऑफ प्रीवियस वीकली हाई एंड प्रीवियस वीकली लो. कुछ ऐसा कैंडल बन सकता है, या कुछ ऐसा कैंडल बन सकता है, कैसा भी कैंडल बन सकता है, बट इट हैज़ टू बी द हाइएस्ट प्रोबेबिलिटी इज दैट इट माइट बी inside candle. Why? Because the prior week it has seen a lot of volatility, and the markets have to digest the increased premium. मैं आपको अगर प्रीमियम भी दिखाऊंगा ना, ये देखो 20 to 900 पे दोनों साइड 230 to 40 पॉइंट्स प्रीमियम बैठा है, without any great OI being there. So it means the market will digest this premium, and next week, if you see the calendar, right, Monday is a holiday, right? 14th is a holiday, 14th of April, and again 18th of April is again a holiday. So you will get only 3 trading days: Tuesday, Wednesday, and Thursday. So it's a piece of cake for option seller to come and just ride the options blindly and take the maximum decay till 17th of April. This is the strategy for next week, and that's why we have, we gave a option selling strategy. All right. So this is the weekly discussion, but apart from anticipating the price action from next week, we'll also, have a discussion that what's the price action being formed, right? So now, if you see on the weekly time frame, the markets breach weekly 100 MA but did not give a close below it.
So that's a kind of bullish sign, and it's a heavy bullish candlestick, but still we did not close above prior weekly high. The moment we do, if the next week closing is coming somewhere somewhat like this or somewhat like this, right, then and only I might go swing bullish for the upper targets, for this target and these targets, right? The first and foremost triggers for me to go positionally or swing basis long or short is either we get a previous day high closing or previous weekly high closing, or we get a closing below these two levels. So on daily time frame we have, yes, we have got a closing above previous daily high, but the higher the time frame, stronger the signal. Keep in mind that जितना बड़ा आपका time frame होगा उतना stronger signal होगा. So on weekly on weekly basis we have still not yet gone bullish, but the candlestick is very healthy green candlestick. एंड अगर आप यहाँ से एक प्राइस एक्शन का एनालिसिस करोगे तो यहाँ से हम एक जो हमने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया था उसका फॉल्स ब्रेकआउट कर दिया हमने, एंड वापस नीचे से सपोर्ट लेके वी हैव क्लोज्ड अबव दिस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट. So the only and only crucial level for us to watch is prior weekly high 22,920. If the markets are crossing 22,920 first level, और देखो 80 पॉइंट्स ट्रेड करके आप क्या कमा लोगे, कुछ नहीं कमाओगे. सो टेक दिस लेवल एज 23,000. Only and only if we get the closing above 23,000 on daily basis, we can target 23,500 simple and straight, and we can target as 23,800, right? Above 23,800 we might get a superb short covering till 24,800. So ये जो 1000 points की रैली है ये ऑलरेडी प्लान्ड है, और ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर मार्केट 23,800 के ऊपर निकला, एक भी दिन का डेली क्लोज आया, इफ द मार्केट्स आर क्लोजिंग डेली अबव 23,800, विल गेट अ स्ट्रेट शॉर्ट कवरिंग टिल 24,800, ये 1000 पॉइंट, एंड इन द मोमेंटम वी माइट टच 25,000 दिस लेवल, राइट? सो व्हाट इज द क्रूशियल लेवल फॉर द अपसाइड फॉर नेक्स्ट वीक? 23,000, उसके अलावा कोई लेवल नहीं है. इफ द मार्केट्स आर नॉट ब्रीचिंग 920 or 23,000, markets might still follow this range. On the downside, if you see, the markets currently took support at 21,750, which was little higher than election low. But if you see, uh, 2024 supports 21,750, 21,750, April support, March support, and May support for 2024 last year. All the three supports market took support back to back here, and then it went up ahead. So होता क्या है कि जिस एरिया में, in whichever area, if the markets have traded for a long time, markets try to make a base in this area. So if this base now gets breached, so the next level on downside, the big level, if 21,750 is getting breached, 2200 will be my target for the coming 2 to 3 weeks. If 21,750 is getting breached, मैं बीच में कोई लेवल दे नहीं रहा, क्योंकि अगर if this fall will come, this fall will be fast, यहाँ पे मार्केट रुकेगा नहीं. तो either market has to take out 21,750 on the downside or 23,000 on the upside. I know it's a very very big range, but एक smaller time frame पे अगर हम जाएंगे, then and only we'll be able to trade intraday. But for swing and positional traders, these are the two levels which you need to take care of, right? और इसके बीच में मैं कोई लेवल नहीं दे रहा, क्योंकि मेरे को देना भी नहीं है. सिंपल है, अगर यहाँ 21,750 के नीचे डेली क्लोजिंग आती है, इफ़ यू गेट अ डेली क्लोजिंग बिलो 21,750, योर प्राइम टारगेट विद इन 2 weeks शुड बी 20,240, nothing less than that. All right, let's go to daily time frame, and I'll remove this drawing, right? What on daily time frame what we have done is, थोड़ा सा आपको you might find the price, the charts little bit messy, but it's the way how I trade. I'll probably change the view and go back to daily. Still it looks messy, right? It's okay, we cannot do anything. So prior day high is 22,930. So above 22,930, a one bullish trade till 23,000 you can easily make, but above 23,000, as I mentioned, that we might do this one. So ये वाली जो रेड कैंडल स्टिक है इसका 50% आता है 2350 के अराउंड रफली. तो ये तीन लेवल्स आपको मार्क करने हैं. अगर ये तीन लेवल्स निकल गए, इवन 20, अगर आपको, इफ़ यू आर नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस इन 23,000, वेट फॉर 2350. इफ 2350 अबव वी आर क्लोजिंग ऑन आर्ली बेसिस, वी माइट डू 23,200 first, and above that we might do 23,300 and then 23,500. So from daily basis मुझे ये लेवल्स दिख रही है मार्केट की. अगर मार्केट 2350 निकालता है, आर्ली बेसिस पे कैंडल क्लोज होती है, मार्केट्स माइट डू 23,250,
and 300. On the downside, prior day low is 22,700, जो मैंने आपको exactly crucial level बताया. If 22,700 is getting breached on Tuesday, we might cover this gap till 22,500, and 22,500 might be a good point to accumulate longs for the above targets. If 22,500 is also breached, the next level would be 22,280. If 22,280 is getting breached, अच्छा, अब एवरीथिंग अपार्ट मैं सारी लेवल्स हटा देता हूँ. ये जो कैंडलस्टिक है ना, इसका 50% मार्क कर लो आप. सिंपल. जस्ट कीप अ मार्क ऑन दिस 50% विच इज 22,360. राइट. तो ये लेवल हमने मार्क किया है 22,360. ये थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ मैं. Right, this is the 50% retracement of this whole green candlestick on weekly. If this happens, there is a high probability that we might do till 21,750. All right, or 22,000 essentially. So इस पूरी कैंडलस्टिक का 50% आता है 22, रफली 22,350 के करीब मान लो आप. तो 22,350, if it's getting broken on the downside and sustained either on daily or hourly basis, so we might do 22,000. Right. On above, I have already mentioned you the levels. Let's quickly go to hourly time frame and have a discussion that in what case, in a big gap up or gap down, what you can do. See, if the markets are opening a big gap down, let's suppose the markets are opening somewhere around here, अगर market यहाँ कहीं खुल रहा है, so it's a high probability that the markets might go till this gap covering and 22,500 level can be reached. Right. If the markets are opening as we are seeing GIFT Nifty 100 points up, अब यहाँ से 100 पॉइंट्स लोगे तो 920 करीब करीब खुलेगा मार्केट. तो सिंपल है, अबव 920 योर बुलिश ट्रेड विल गेट ट्रिगर्ड. और इफ़ आई टेक यू गाइज ऑन 30 मिनट्स, मैंने ना मंथली उसमें डेली एनालिसिस फ्राइडे के मैंने एक पॉइंट डाला था. ओनली एंड ओनली गो लॉन्ग इफ द मार्केट्स आर सस्टेनिंग a 30 minutes candlestick above 22,900. You can go and check in the telegram group. I share my intraday analysis every day there morning. It's a daily routine, but it did not sustain and hence we did not go long. So यहाँ पे मार्केट ने एक छोटे टाइम फ्रेम पे एक करेक्शन प्राइस एक्शन बनाया है, जो ये ऐसा प्राइस एक्शन बन सकता है. बट दिस विल गेट इनवैलिडेटेड द मोमेंट वी गैप अप 100 पॉइंट्स on daily on this one markets. Right. So this one will get invalidated and the moment we do a 100 point gap up, we might breach the prior day high which is 920. So आप एक trade ले सकते हो from 930 to 23,000, but real bullish trigger will only come above 23,000. Right. If the markets are opening flat, do not trade in this range. ये range को intraday basis पे trade मत करना. क्या रेंज है? 23,000 and 22,700. 300 point range, do not trade in this range. Below 22,700 we might do gap covering till 22,500. Below 22,350 we might go till 22,000. Above 23,000 only bullish trigger will come till 23. First target will be 23 200 250. Second target would be 23 350 and the final target would be 23 500. Right. If it goes till 23,800 that would be an exceptional rally. And above 23,800, क्योंकि यहाँ पे ये एक पहला रेजिस्टेंस भी हो चुका था, above this level markets might do short covering, great short covering like this. All right. So we have done a discussion on Nifty 50. Let's come to Bank Nifty. बैंक निफ्टी में भी देखो बहुत इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन है. जो पूरा मार्केट ने गैप डाउन कवर किया था, बैंक निफ्टी ने उसके ऊपर आके क्लोजिंग दे दी है. देखो, अच्छा बैंक, ओके फाइन, सॉरी माय बैड. बैंक निफ्टी ने जितना गैप डाउन दिया था, बैंक निफ्टी इज येट टू कवर दिस गैप. सो इफ निफ्टी हैज कवर्ड इट, बैंक निफ्टी विल ऑफ कोर्स कम इन सिंक एंड इट विल कवर द गैप. Right. So bank nifty's gap covering level is 51,500. So mark these levels 51,240 and 50,600. Okay, let's first go to weekly time frame. एंड वीकली पे आप अगर बैंक निफ्टी में देखोगे ना, तो आपको सारी कैंडल्स ग्रीन दिखेगी. यू विल सी ईच एंड एवरी कैंडल ग्रीन. की मार्केट नीचे जा रहा है बट बैंक निफ्टी आई थिंक अक्यूमुलेशन फेज में है. बिकॉज अगर बैंक निफ्टी इफ इट्स गोइंग डाउन, देन वाई एवरी थर्सडे फ्राइडे बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग आती है? ऐसा क्यों होता है? द मार्केट्स आर गोइंग डाउन इन फर्स्ट हाफ ऑफ द वीक एंड द मार्केट्स आर कवरिंग इन सेकंड हाफ ऑफ द वीक. भाई ग्रीन कैंडल तभी बन रही है ना कि मार्केट फर्स्ट हाफ में नीचे जा रहा है और सेकंड हाफ में ऊपर आ रहा है. राइट. सो आई थिंक somebody is accumulating banks and this is certainly because आरबीआई ने इतना लिक्विडिटी इन्फ्यूज किया है कि देर इज नो नेगेटिविटी इन बैंकिंग सेक्टर अभी.
right? So what you need to take care on weekly basis is 51 250. Above 51 250 we will essentially do 52,000, 52,600, sorry, 52,500. Above 52,500 we will essentially do 54,000. So this is my big target for bank nifty. Above 52,000 or 52,100, आई थिंक ये लेवल भी अगर मैं हटा दूँ, ये लेवल मैंने क्यों बनाया, आई एम नॉट श्योर, अबव 52,000, 52,100, बिकॉज सर्टनली एक साइकोलॉजिकल लेवल है इसलिए मैंने दिया है. अबव 52,500 वी विल एसेंशियली डू 54,000. So this is a 1,500 point range. All right. On the downside, if you guys see, ये वाला जो इसका 50% लेवल है, सिंपल है, इसका 50% लेवल निकालते हैं. क्योंकि अभी सेंटिमेंट थोड़ा बुलिश हुआ है आपको. अगर इफ दिस सेंटिमेंट हैज़ टू गेट चेंज टू नेगेटिव सेंटिमेंट, you will have to see the 50 percentage of the weekly bullish candlestick, which is 5,200, 50,220. तो ये मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे. इफ वी आर गोइंग बिलो दिस लेवल विच इज द 50% that we might do 50,000, and if at all we are breaching 50,000 we might do 49,200 and or 49,000 you can say, right? Exactly 49,100. Let's go to daily time frame, and daily time frame पे the prior daily high is at 51,260. So the moment, if at all, because we are opening gap up, so bank nifty, if anyone has to take a trade above 51,250 we might do this gap covering till 51,400. all right. और बैंक निफ्टी में मैं आई थिंक 250 पॉइंट्स बचे, ज़्यादा पॉइंट बचे नहीं है. सो ये गैप कवरिंग होगा बैंक निफ्टी में. 100 पॉइंट्स जो गैप अप होगा निफ्टी का, उसी में आई थिंक ये गैप कवरिंग कर देंगे. उसके बाद इट डिपेंड्स दैट इफ द मार्केट्स आर, इफ द बैंक निफ्टी इज क्रॉसिंग दिस क्लस्टर, क्योंकि यहाँ पे मार्केट बहुत ट्रेड हुआ था. और इफ़ यू गाइज रिमेंबर, मैंने ये वाला प्राइस एक्शन दिया था, ये सक्सेसफुल हुआ था. एंड इफ़ यू गाइज रिमेंबर, मैंने इसके टॉप पे भी बोला था कि ये वाला प्राइस एक्शन भी होगा. तो मार्केट केम डाउन ऑल्सो. ठीक है. तो नाउ इफ मार्केट्स आर क्रॉसिंग दिस क्लस्टर, क्योंकि यहाँ पे मार्केट्स बहुत ट्रेड हुआ था, अगर बैंक निफ्टी इफ इट क्रॉसेज दिस क्लस्टर, सो अबव 52,100 वी माइट डू दिस मूव. ठीक है, बहुत क्लियर है. बट इफ इट ऑल वी आर ब्रीचिंग 50, आई थिंक द 50% विच इज आई थिंक 5220, देन यहाँ से अगर ये आता है तो ये एक डिप बाय कर सकते हो इस चीज़ के लिए. बट इफ दिस रेंज इज गेटिंग ब्रीच्ड, ये वाला पार्ट ब्रीच हो रहा है, तो ये आप आ सकते हो एंड यू कैन गो फर्दर डाउन, then you can reach this level. All right, I think price action in bank nifty is clear. Let's go to hourly time frame and discuss on the basis of opening की, opening के basis पे हम कैसे इसको discuss कर सकते हैं. All right, so this is the hourly time frame, and so hourly time frame पे अगर gap up होता है, I think if nifty gaps up I think around 100 points, so we might see 200 to 250 points on bank nifty. The moment we see that, द बैंक निफ्टी विल ट्राई टू क्रॉस द लेवल ऑफ 51,260. अगर इसके ऊपर क्रॉस होता है, पहला लेवल इंट्राडे बेसिस बता रहा हूँ मैं, स्विंग और पोजिशनल होते हैं आपके डेली और वीकली. दिस इज फॉर इंट्राडे 51,500 एंड अबव 51,500 वी माइट डू टिल 52,000. ठीक है, ये 500 पॉइंट, ये 700 पॉइंट का रेंज ट्रेड आप कह सकते हो. यू विल बुक योर लॉन्ग्स. देखो, अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करता है, यहाँ पे ये ट्रेड लेना और बुक अपने लॉन्ग्स यहाँ पे कर लेना. इफ द मार्केट्स ब्रीच, इफ द मार्केट्स ओपन अ बिग गैप डाउन, सो मार्केट्स ये वाला गैप कवर करने आ सकता है. तो नीचे एक रेजिस्टेंस है 5600 पे. इफ द मार्केट्स आर ओपनिंग गैप डाउन, यहाँ पे कहीं खुल रहा है, वॉच आउट दिस लेवल, वॉच आउट द लेवल फॉर 5600. इसके नीचे जाएगा तो मार्केट ये गैप कवर करके हल्का सा मोमेंटम देके फिर ऐसा एक राउंड कर सकता है, राइट? ऑल राइट, आई होप दीज लेवल्स आर गेटिंग क्लियर टू यू. बिलो 5650 the markets will do a gap covering till 5270, 5200. But if at all 5220 is the 50% retracement level also, if at all we are breaking this, then we might do this whole move again, right? So bank nifties we also have had discussion. Let's quickly go and discuss premiums. So first of all, मैं आपको I want to make you point out this thing. I want to point out this thing कि next week में सिर्फ 3 trading sessions हैं and the premium is very very high. So the highest probability option sellers they can do is eat the premium, and the premium, और यहाँ से देखो ये why the next week the scenario
विल बी साइडवेज एंड इट इज़ द बेस्ट केस, बिकॉज मैं आपको समझाता हूँ. फ्राइडे को नथिंग नेगेटिव केम फ्रॉम ट्रम्प. सो ऑप्शन सेलर्स नो दैट देर इज नथिंग नेगेटिव टू टैकल. टीसीएस का रिजल्ट आया है, टीसीएस का रिजल्ट बिलो एवरेज है, बट सिंस द यू नो TCS stock has already, I think, factored that fall. So now it is not going more, bearish. I think on Friday also it closed in green. So the premiums are very high, and the option seller, the most favorable thing for the market is to eat premium for the whole थ्री ट्रेडिंग सेशन. सो हो क्या सकता है कि अगर मार्केट क्रॉस नहीं किया 23,000 ऑन द अपसाइड और 22,700 on the downside, तो next three trading sessions you might see a movement in this range only. And this is why I'm saying this is highest probability, is because market नीचे भी जा चुका है और ऊपर भी आ चुका है. सो मार्केट वोलेटिलिटी डाइजेस्ट करेगा इस पूरे एरिया में. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और ये हर बार देखा है, हर इवेंट के बाद देखा है मैंने. So I'm cautioning you, option buyers, that next week might not be favorable for you. Even if it's Bank Nifty, even if it's Nifty 50, we might find some positional or swing entries in IT, because IT index, it has fallen a lot. अगर आप IT index देखोगे, if IT index is able to protect 31,000, we might go a little bit bullish till this level. इफ़ यू सी ऑटो इंडेक्स भी अच्छा कर रहा है, जो शॉक से गैप डाउन होता है वो कवर हो चुका है. सो इन ऑटो इंडेक्स द बिगेस्ट कैंडिडेट इज टाटा मोटर्स. मैं चार्ट नहीं दिखाऊंगा, बट इज बिकॉज इट इज़ नॉट अलाउड फ्रॉम सेवी. बट उसमें सबसे बढ़िया कैंडिडेट टाटा मोटर्स. अगर ऑटो को बुलिश होना है तो वो ट्रेड कर सकते हो. मेटल 4% गैप अप, 4% क्रॉस करके 4% अप होके ऑन फ्राइडे क्लोज हुआ है. सो इफ निफ्टी मेटल इंडेक्स क्रॉसेस प्रायर डेली हाई, सो हिंडाल्को हो गया, टाटा स्टील हो गया, दे पोज अ वेरी वेरी गुड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज. सो लेट्स क्विकली गो एंड डिस्कस ओआई डेटा. हाँ, हम ये डिस्कस करते हैं प्रीमियम बहुत हाई है. तो यहाँ पे मुझे जो देख के ओआई डेटा में लग रहा है, अगर मैं टोटल ओपन इंटरेस्ट देखूँ, सो द बिगेस्ट सपोर्ट इज एट 22,500 एंड बिगेस्ट रेजिस्टेंस इज एट 23,000. दीज आर द टू लेवल्स टिल, आई थिंक, फ्राइडे. आई थिंक 17 है, फ्राइडे हॉलीडे. टिल 17 द मार्केट की रेंज यही रहेगी, 23,000 से 22,500. If 22,500 is getting breached, 22,000 will be eventual destination. If 23,000 is getting breached, 23,500 is the eventual डेस्टिनेशन. ये हम चार्ट पे डिस्कस कर चुके हैं. फ्राइडे को डेटा क्या कैरी होके गया है? फ्राइडे को डेटा बुलिश कैरी होके गया है. देर आर आई थिंक 1.5 CR put shorters, I think for 17 April I'm seeing, and उसके contrary only 70 lakh shorts have been carried for Nifty. So Nifty, the data is slightly bullish on the bullish side. For Bank Nifty, if at all you see, Bank Nifty में data बहुत bullish है. There has been a unwinding of 16 lakh shorts and addition of 4 lakh longs. So people are still not confident that they have written almost 15 lakh, 20 lakh longs, but still I think this is a point of short covering which came on Friday, right? And it totally depends on the level now, that what level we are crossing on Nifty 50. So this was the discussion of OI data also. So this was it, traders. I hope you have gotten a great deep insight in what, how you can trade the markets on Tuesday, right? Monday would be a holiday, but Monday derivatives market will be open from sorry, not derivatives, commodity markets will be open from 5 o'clock. So we'll be focused on that also. But I hope you have got a gist of what and how you can trade in the next market. The highest probability would be sideways. I will go for sideways action. I will post some option selling trades. I am not looking for any directional trades, because ऐसा हर बार होता है कि अगर आपको लास्ट वीक में बहुत अच्छी वोलेटिलिटी, मार्केट ऊपर भी गया नीचे भी आया, सो यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स पैसा लूज करते हैं. तो उसके बाद वो अपनी रिकवरी करने के लिए व्हाट दे डू इज दे राइट स्ट्रैडल एंड स्ट्रैंगल. उस केस में होता क्या है कि मार्केट मूव नहीं करता. हो सकता है इंट्राडे स्पाइक्स आएंगे, बट आर्ली आर्ली कैंडल स्टिक्स में या टू आर्ली कैंडल स्टिक्स में आपको डोजी ही मिलेगी. 15 मिनट्स में मार्केट्स माइट गो अप इन 3 कैंडल्स, देन अगेन इट नेक्स्ट 3 कैंडल्स इट माइट कम डाउन. सो ये आपको टेक केयर करना पड़ेगा. और इसका सोल डिसिप्लिन कहाँ से आता है? दैट इफ द ट्रेड ओनली व्हेन द रेंज इज गेटिंग ब्रोकन आउट. 23,000 ऑन द अपसाइड, 22,700 ऑन द डाउन साइड. सिंपल, राइट? और अगर आप ऑप्शन प्रीमियम से, आपको एक चीज़ और देखनी है. देखो, मैं आपको एक चीज़, फॉर 17 अप्रैल एट द मनी स्पॉट है 23,000 ले लो, 22,900 ले लो, 250 पॉइंट्स प्रीमियम दोनों साइड है. मीन्स 22,900 प्लस 250 अगर आप करोगे तो 150 आएगा.
और इसमें 150 निकालोगे तो क्या आएगा आपका लेवल 750। तो 750 से 23 150 रेंज हो सकती है इस वॉलेटिलिटी के हिसाब से। तो इस रेंज के अगर बाहर मार्केट नहीं जा रहा तो यू विल नॉट गेट एनी ट्रेड। हो सकता है कि 22 930 के ऊपर आपको एक ट्रेड मिल जाए डेली बेसिस पे, तो 23 150 मार्केट चला जाए, बट वो ऑप्शन सेलर्स को बचा लेगा 23 150 लेवल जो हमने ये डिस्कस किया है। All right. So if you guys have been watching till this moment, leave a like, leave us. If you have not subscribed channel, leave a subscribe. I hope you have learned something from price action and from what you know how you can trade the next week. Cheers traders. Have a good weekend. Have a good long weekend and stay safe in the markets on Tuesday. Cheers.